Classification based on molecular forces. Now see what is happening over here. Second type of classification we are saying, between polymers what kind of forces are existed. See, polymers are used in different fields according to its characteristics. Polymers are classified by its mechanical properties, by its tensile strength. You know what is tensile strength, when अगर आप खींचते हो तो कितना वो strong है. Elasticity, toughness, these properties are shown with the help of intermolecular attraction forces. जो उनका पॉलीमर का जो ये थ्रेड बन रहा है, इनके बीच में किस टाइप का फोर्सेस रहता है. ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहेंगे. ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्सेस वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन लॉन्ग चेन और इन द ब्रांच. उसमें इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स. Normally rubbers are elastomers. This rubber is a solid substance possessing elastic property. In elastomeric polymers, long chain of polymers are held together. इनके बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है या तो अट्रैक्शन होगा वो वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रहता है. ड्यू टू दिस वीक इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेस, इलास्टोमर्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड समटाइम्स फ्यू क्रॉसलिंक मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं. ओके, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे. क्रॉसलिंक इस तरीके से बनेगा. और इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूं तो आप लोगों ने देखा हुआ है, मालूम है वो ग्रिल्स आती है, खुलती है और बंद होती है, कहीं लिफ्ट के दरवाजे पे ऐसे. तो उस तरीके से व्हेन यू पुल इट, इट कैन बी स्ट्रेच, इट कैन कम बैक अगेन. तो ये क्रॉसलिंक ऐसी बनती है. सो यहां पे वो सम के अंदर ऐसा रहेंगे. So elastomers can be stated. A few cross-linked molecules are observed in this long chain of polymers with the help of polymer to retract its original position. उसकी पोजीशन पे वो वापस आ सकता है. Okay, when the force is removed, नेचुरल रबर है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन. आर्टिफिशियल रबर या तो नेचुरल रबर. ये नेचुरल रबर है नियोप्रीन. आइसोप्रीन से ये सब आर्टिफिशियल रबर है, हम डिटेल में देखने वाले हैं. ये इलास्टोमर्स हो गया. देन सेकंड जो हमको पढ़ाई करना है वो है फाइबर्स. सेकंड हमारे पास कौन सा है? फाइबर्स. फाइबर्स नॉर्मली दे आर थ्रेड स्ट्रक्चर रहेंगे. Those polymer compound possesses high tensile strength and high modulus are known as fibers. उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड इवन थ्रेड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहता है. जो चेन रहेगी पॉलीमर की चेन, दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन फाइबर्स. एग्जांपल्स नाइलॉन है, टेरिलिन है. ये नाइलॉन 66 है. ये तो आपको इन पे कितना अच्छी तरीके से याद रह जाएगा कि बार बार आप इसका एग्जांपल दे दोगे. मैं सिखाऊंगा आपको कैसे लर्न करना है. देन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता दूं थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में. इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स स्लाइटली ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन इज सीन इन लॉन्ग चेन ऑफ ह्यूज मॉलिक्यूल. थर्मोप्लास्टिक का मतलब ऐसा है कि ऐसे पॉलीमर्स दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. अगर आप उसको हीट करते हो क्या बन जाते हैं? सॉफ्ट. एंड अगेन जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हो तब वो नॉर्मल बन जाता है वापस. ओके, एंड बिकम्स इनफ्यूजिबल ऑन कूलिंग. उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं. हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट एंड वापस रीगेन कर लेता है इस शेप को. नॉर्मली इस स्ट्रक्चर एंड बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर आप करते हो तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. फॉर एन एग्जांपल सर्टेन प्लास्टिक है, अगर आप उसको हीट करो थोड़ा सॉफ्ट बन के आप उसको शेप चेंज कर देते हो, बराबर. लेकिन बहुत हीट करते हो तो काला ब्लैक क्रिस्टल बन जाता है वो. ओके, आप पॉलीथीन को कभी जला के देखिए, वो ब्लैक कलर का काला एकदम बन जाता है. तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल. सो इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मोर देन इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है बट फाइबर से लेस है. इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज अंडरलाइन करना. See over here, we'll continue further. They are normally, thermoplastic polymers are soft and fusible.
एंड लेस स्ट्रॉन्ग, थर्मोसेटिंग से लेस स्ट्रॉन्ग होंगे. व्हाट इज थर्मोसेटिंग में समझा रहा हूं आपको. नॉर्मली एग्जांपल्स आपको याद रखना है, पीवीसी है, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, दे आर द एग्जांपल्स. बराबर है कि नहीं. विल कंटिन्यू फॉर द थर्मोसेटिंग में ऐसा है, द कंस्टिट्यूशन ऑफ दिस पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसके अंदर लार्ज स्ट्रक्चर रहेंगे, क्रॉसलिंक भी रहता है. बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज लॉन्ग चेन कंटेनिंग मेनी ब्रांचेस होते हैं, इसीलिए जब इसको आप हीट करते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो क्रॉसलिंक बाइंडिंग होने की वजह से बढ़ जाता है एंड वो सॉफ्ट नहीं बनता है. इसके ऐसे क्रॉसलिंक रहता है. अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी क्रॉसलिंक और स्ट्रांग बनती है, इसलिए वो सॉफ्ट नहीं बनता है. सो देयरफॉर इवन एट हाई टेम्परेचर उसमें कुछ नहीं होने वाला है. ओके. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स नॉर्मली हार्ड एंड स्ट्रांग रहते हैं, उस पर स्क्रैचेस भी नहीं होते. दे आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नॉर्मली बेकेलाइट एंड मेलेमाइन हमारे जो माइक्रोवेव प्रूफ कंटेनर्स रहते हैं जिसमें दे आर सपोज टू बी लाइक दिस, दे आर सपोज टू बी लाइक दिस. ओके. आर दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स दे आर थर्मोसेटिंग. वो नॉर्मली मेलेमाइन के होते हैं. उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. अभी दो टाइप के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है. As we were seeing about the polymerization, let us continue with one more topic but in detail. See, we talked about the types of polymerization reaction. There are mainly two types of polymerization reaction. One is addition polymerization reaction. It is also known as chain growth polymerization reaction. It is also known as chain growth. I'm explaining in detail. And the second is known as condensation polymerization. We have seen in not much detail, but we have seen a little bit. It is also known as step growth polymerization. Now let us understand in detail about addition polymerization or chain growth polymerization, and let us try to understand its mechanism. And mechanism addition polymerization, homopolymerization की मैं आपको सिखाता हूँ. There are different types of mechanisms are there. One mechanism which we need to study is free radical addition polymerization, and for that I got one clipping made by someone, but let me explain you. Someone has done it and very nicely explained. Let's see that. Let's learn about addition polymerization. Addition polymerization is a radical process and takes place in three stages. First, initiation. Second, propagation. And third, termination. Stage 1, initiation. See, initiation requires radicals. These are usually provided by an initiator such as an organic person. What is happening over here? Addition polymerization takes place in three steps, and the first step which we are understanding, that is called initiation. In initiation, what happens? Let us understand. This reaction is normally being taken place in the presence of peroxide. यहाँ पे हमारे पास जो peroxide है वो benzyl peroxide. What do we have? Benzyl peroxide. तो इन benzyl peroxide क्या होने वाला है वो जरा समझते हैं. For example, dibenzyl peroxide. Dibenzyl peroxide can act as an initiator because the oxygen-oxygen bond energy in these compounds is low enough for the bond to be broken by heat or exposure to light. Have you understood why they are saying we have to use this? Because in peroxide, oxygen-oxygen bond is weak. Its bond energy is weak. It can be easily broken. So they can easily break this. The bond breaks homolytically, resulting in the formation of two radicals. It forms two radicals. Bond breaks homolytically. It is the phenyl radical which initiates the chain reaction. Here we get one phenyl free radical.
whenever free radical is there, there is a dot has been put over there. Phenyl, and as we know, free radicals are normally, those free radicals are normally, they are, they have incomplete octet, they have incomplete octet, they are neutral and very reactive, and they are very reactive. Because of these three properties, बिकॉज ऑफ दिस थ्री प्रॉपर्टीज, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसा है, वो किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, उसको रेडिकल बनाता रहता है. फ्री रेडिकल का काम क्या है? किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसको क्या करना है? फ्री रेडिकल वापस बना. एंड फ्री रेडिकल जब दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तभी वो नॉर्मल बनता है. अदरवाइज इट कीप्स ऑन डूइंग व्हाट? फ्री रेडिकल दूसरे को नॉर्मल में से फ्री रेडिकल 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 ऐसे बनाता रहता है. कीपिंग दिस इन माइंड, विल कंटिन्यू फॉर द. Because of the presence of an unpaired electron, a radical is an extremely reactive species and takes part rapidly in the next stage. Stage 2. The first stage was initiation, second is propagation. A radical now reacts with one of the monomer molecules by pairing its electrons. We have already seen ethene का monomerization, but now we are seeing in detail. इथीन के एक मोनोमर के साथ वो कंबाइन with one of the electrons in the double bond to give a new radical. You can see it over here. ये था हमारा फ्री रेडिकल हैविंग रेडिकल शिप ओवर हियर. इथीन का एक मॉलिक्यूल, उसका ये डबल बॉन्ड वो खींच लेता है, तोड़ देता है, उसके साथ कंबाइन होके फिनाइल एंड इथीन कंबाइन हो गया, एंड दिस हैज बिकम अ फ्री रेडिकल. दिस हैज बिकम ए free radical. Are you getting this? Yes or no? The double bond in the alkene has been replaced by a single bond. This new radical reacts with another alkene molecule and the chain continues to grow. It keeps on continuing, keeps on reacting with the ethene molecule. नॉर्मल इथीन के साथ कंबाइन होते जाता है, इथीन 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 ऐड होता जाता है, एंड एंड में आपको क्या मिलता रहता है? फ्री रेडिकल. तो इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, बिकॉज चेन इज ग्रोइंग, चेन इज ग्रोइंग ओवर हियर. आर यू फॉलोइंग दैट पॉइंट? The new radical then reacts with molecules of ethene, forming a side chain. Propagation is very rapid. At any one time, the reaction mixture will contain only growing chains and unreacted monomers until the growth is brought to an end by termination. Okay. लास्ट में ये चेन ग्रोथ कंटिन्यूस रहता है. लास्ट स्टेज पे वो आते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में दो रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके खत्म करेंगे. देखो termination. Termination occurs when two radicals combine. Because the concentration of radicals in the mixture is very low, it is more likely that a radical will collide with a molecule of monomer, thus building long chains. If we see carefully over here, because as it is saying over here, because the concentration of radical in the mixture is very less, it is more likely that radical combines with a normal, it collides with a normal molecule and continuously एक लंबा चेन बना रहता है. एंड एट द एंड जब भी कुछ बाकी बचता नहीं, तभी रेडिकल के साथ रेडिकल कंबाइन होगा. तब तक तो काफी लंबा चेन बन चुका होता है, तब तक तो काफी लंबा चेन बन चुका होता है. एंड दैट थिंग वी कैन सी इट ओवर हियर. The addition polymerisation stops when two free radicals combine and no new radicals are formed. This video is brought to you by... Are you following this? This is what our textbook says. Free radical addition polymerization, same reaction. We have to explain. First we have benzyl peroxide initiator. Benzyl peroxide is C6H5COO, C6H5COO. This is our peroxide linkage. Homolytically टूटता है. Whenever homolytic fusion होता है, we always get free radicals. सबसे पहले आपको benzyl free radical मिलता है.
बेंजाइल फ्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल, तो इसमें से CO2 निकल जाएगा। दो बेंजाइल फ्री रेडिकल मिलेंगे, एक यहां से और एक यहां से, यू कैन सी 2 ऑफ देम, बट उसमें से 2 CO2 निकल जाएंगे नॉर्मल फॉर्म में एंड फिनाइल फ्री रेडिकल मिलेंगे। देन फिनाइल फ्री रेडिकल वन ऑफ द मोनोमर के साथ कंबाइन हुआ, आपको और एक फ्री रेडिकल मिला। कंटिन्यूसली दिस चेन keeps on growing. Second step, then that's the second step, that's called propagation. One more molecule combine हुआ, one more molecule and molecules combine हो गए, and we get the propagation over here. And when two free radicals combine, that's termination. That is termination. This is called chain growth polymerization. We have to learn this. They may ask you explain mechanism of chain growth polymerization.